water engineers, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, गौर प्रेमानंदे। रेडी है आप कीर्तन करने के लिए? श्योर ना? कुछ पीछे छोड़ के तो नहीं आए कुछ? हाँ, क्या है कि हम लोग करते हैं नाटक कीर्तन करने का, मगर पीछे मन कहीं और होता है। हाँ? भगवान बोलते हैं अगर ये नाटक भी करोगे एक न एक दिन तुम शुद्धिकरण की ओर जाओगे। ये कृष्ण भक्ति का सार है। It's very important. So today we'll be all talking about that only, okay? Even if somebody is doing only act, Krishna will take him back to God. And that's all only in the relationship with the Krishna. Bhakti only. That is the potency. Okay. Oh, Dhananjaya Prabhu. How are you, sir? Good morning, sir. Good morning. Your Guru Puja was led by our temple commander and you were on the job, sir. अभी सेवा तो भक्त की तो हर जगह सेवा थी, मगर अनाउंसमेंट इनका हुआ था। हमने सोचा था कि आज पूरे मंदिर में ये पूरा रॉक करेंगे। क्या करें? अभी शाम को संध्या आरती गाएंगे। Because he swiped with you, sir. आइए आइए जल्दी से दीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। क्या करे करना है, बोलना पड़ता, दे दो मेरे को। So that's the situation. What to do now? Okay? Because क्या है कि जब कीर्तन करते रहते हैं, बीच में लाएंगे, डाल देंगे तो पता चला ऐसा हो गया। So it's not good. Because when you are completely absorbed in the kirtan, even the slightest disturbance can really, take you off the tangent. Okay? So I don't want any disturbance while you are chanting, while I'm chanting, because both of us, when we keep on chanting, then there'll be a wonderful equation. And that the equation created by chanting the holy name of the Lord in the congregation will help us to purify our deha. You see? I may not please Krishna with my endeavor, you may not please Krishna with your endeavor, but together if we are endeavoring to please Krishna, it's possible that he will be impressed. That's why Prabhupada ji says that mass kirtan is very, very important. Sometimes we may not understand that it's going to act, it's going to purify. And when that consciousness will come that when we are congregating and together we are chanting, we will be helping each other to serve Krishna. Lord came 550 years back and he did congregational chanting. He didn't teach us to go to Himalayas. भगवान 500 वर्ष 50 वर्ष पहले आए तो उन्होंने हमको बताया नहीं कि हमको जंगल में जाना है। उन्होंने बताया कि भक्तों के समूह में सदैव कीर्तन करें और ये कीर्तन की जो ध्वनि है हमारे तन मन और सब को पवित्र कर देगा। अगर कोई पूछे हमारे जीवन के भक्ति का राज क्या है, भक्ति का राज यही है कि हमने अपने देह को नाम संकीर्तन, भक्तों की संग में, प्रसाद सेवन, दर्शन भक्तों के समूह के साथ किया, इसलिए आज हम आध्यात्मिक जीवन में हैं। और जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए everybody is going to do wonderful kirtan
and help me to become purified, and in terms the kirtan will purify you very, very nicely. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Rangana Yashodanandana Brajajana Rangana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Ayo Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Rangana
Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Manuja Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody, Haribo. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radhe. Jai Radhe. Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe. Jai Gaurani Jai Gaurani Jai Gaurani Jai Jai Gaurani Jai. Jai Gaura Hare Gaura Hare Gaura Hare Jai Gaura Hare. Jai Jai Prabhupada 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 Gurudev. Jai Jai Prabhupada 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 Gurudev.
Jai Vishnupada Paramasupura Acharya Sutra Sat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Everybody founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपनाथ राधा कुंशाम कुंड गिरि गोवर्धन की जाय। वृंदावन धाम की जाय, मथुरा धाम की जाय, द्वारका धाम की जाय, कामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जाय, जगन्नाथपुरी धाम की जाय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाय, मायापुर नवदीप धाम की जाय, गंगा माई जमुना माई की जाय, वृंददेव तुलसी महारानी की जाय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय, गौर प्रेमानंदे। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories Shri Guru and Gauranga. Thank you very much for coming for this Sunday's program. Krishna bless you, keep you always tuned to his bhakti nicely so that you can go back home, back to God in this lifetime. The endeavor put by yourself will be rewarded and you shall be relieved from all the anxieties of the material world by just adhering to the instructions of the spiritual master and taking up to the Krishna consciousness very seriously. Up there, people are suffering in the material world and people have to have only shelter of a pure devotee of the Lord. And if you have the shelter of a pure devotee of Lord and if you're not endeavoring to please him, your life is not going to be happy. The purpose of human life is to see that you engage in devotional service under the bona fide spiritual master. And that's what we are all doing together. And together we stand and divided we fall. This is my personal understanding. You may have your own understanding. This is my understanding. And whatever, anybody, we have to keep on loving each other, putting our best to see that we don't become sectarian, we don't become, categorizing themselves. We are all Vaishnavas. We all have to put our hands together and appreciate each other's endeavors in pleasing Prabhupada and the great Acharyas. So this is our humble request to you. Never come into the cavity of a particular group or something like that. Just openly serve Prabhupada very nicely. That will give you bliss all the time. Otherwise, sometimes your consciousness will be biting. If you're trying to go contrary to the great Acharyas have been very, very compassionate. They were not sectarian. They were completely pure souls without seeing a tinge of iota of anybody's faults. Is to pour their heart so that they can become wonderful devotees. So this center has to emerge like that. You all have to become like that so that we can together please Prabhupada and Vartaman Gurus. That's our endeavor. And remain together in an attempt to execute devotional service. So on 2nd and 3rd, there's going to be the anniversary, 13th anniversary of this temple. After 2 years, we are celebrating together. So a lot of devotees will be coming from all the temples. I want you to emerge best. Everybody should have a shaven head. Everybody should have a shaven dadi, nice tilak. Okay? If you are a grihastha, put white color. If you are a brahmachari, put brahmachari class. If you are vanaprasthi like me, so you can wear yellow. Or if you are a new bhakta, you can wear new. The choice is yours. So in Krishna consciousness, I always think that I am a new bhakta. So that's why I am wearing yellow. Not that, you see? I'm always thinking that I'm a new bhakta. So in that mood, if I execute my devotional service, Krishna will pardon me. You will always pardon me. Okay? So
Please remain together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 1, the verse number is 35. And we'll be also reading the verse number 34. Yesterday, our Shyam Bihari Prabhu had given Pravachan on 33 verse, correct? So we're trying to, Sri Yudhishthira Vacha Kidrasya Kasyava Sapo Haridasa Abhimarshana Ashradhyatya Iva Bhati Harir Ekantinam Bhava. Verse number 35, which is on the board. Dehendriyasu hinanam Vaikuntha Puravasinam Deha Sambandha Sambandha Etad Akyatum Arhasi Dehendriyasu hinana Vaikuntha Puravasina Deha Sambandha Sambandha Etad Akshatum Arhasi Dehendriyasu hinana Vaikuntha Puravasina Deha Sambandha Sambandha Etad Akhyatum Arhasi.
Mothers? Oh, very good. So we'll do it in English or Hindi? Okay, इस बार ज़्यादा द्वंद्व नहीं है. Word-to-word translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Deha of a material body, Indriya, material senses, Asu, life breath, Hinanam, of those devoid, Vaikuntapura, of Vaikuntha, Vasinam, of the residents, Deha Sambandha, in a material body, Sambandham, bondage, Etad, this, Akshatum Arhasi, please describe. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The bodies of the inhabitants of Vaikuntha are completely spiritual, having nothing to do with the material body, senses or life here. Therefore, kindly explain how associates of personality of Godhead were cursed to descend in material bodies like ordinary persons. हिंदी वासियों के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुने. वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक होते हैं. उनको भौतिक शरीर से, इंद्रियों या प्राणवायु से कुछ लेना देना नहीं रहता. अतएव कृपा करके बताइए किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतरित होने का शाप दिया गया. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. This very significant question would be difficult for an ordinary person to answer. But Narada Muni, being an authority, could answer it. Therefore, Maharaja Yudhishthira inquired from him, saying, Etad akyatum arhasi. Only you can explain the reason. From authoritative sources, it can be discerned that associates of Lord Vishnu who descend from Vaikuntha do not actually fall.
They come with the purpose of fulfilling the desire of the Lord, and their descent to this material world is comparable to that of the Lord. The Lord comes to this material world through the agency of his internal potency, and similarly, when a devotee or an associate of the Lord descends to this material world, he does so through the action of spiritual energy. Any pastimes conducted by the Supreme Personality of Godhead is an arrangement of Yogamaya, nor Mahamaya. Therefore, it is to be understood that when Jai and Vijay descended to this material world, they came because there was something to be done for pleasing the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, it is a fact that no one falls from Vaikuntha. Of course, a living entity who desires Sayuja Mukti remains in Krishna's Brahman effulgence, which is dependent on Krishna's body. Brahmano hi pratishthanam. Such an impersonalist who takes shelter of the Brahman effulgence must surely fall down. This is stated in the Shastra Bhagavatam 10.2.32. Yahi anya ravindaksha vimuktamaninas taya asta bhavat avishuddha buddhaya aruyam krichena param padam tata patanti ado narada yusmad angrahaya. O Lord, the intelligence of those who think of themselves liberated but who have no devotion, impure. Even though they rise to the highest point of liberation by dint of severe penances and austerities, they are sure to fall down again into the material existence, for they do not take shelter of your lotus feet. The impersonalists cannot reach the Vaikuntha planets to become associates of the Lord. And therefore, according to their desires, Krishna gives them Sayuja Mukti. However, since Sayuja Mukti is partial Mukti, they must fall again in this material world. When it is said that the individual souls fall from Brahmaloka, this applies to the impersonalist. From authoritative sources, it is learned that Jaya and Vijay were sent to this material world to fulfill the Lord's desire to fight. The Lord also sometimes wants to fight, but who can fight with the Lord but a very confidential devotee of the Lord? Jaya and Vijay descended to this material world to fulfill the Lord's desire. Therefore, in each of their three births, first as Hiranyaksh and Hiranyakashipu, second is Ravana and Kumbhakarna, and third as Shishupal and Dantavakra. The Lord personally killed them. In other words, these associates of the Lord, Jaya and Vijay, descended to the material world to serve the Lord, to fulfill his desires to fight. Otherwise, as Maharaj Yudhishthira says, Ashradhaya Iva Bhati. The statement that a servant of the Lord could fall from Vaikuntha seems unbelievable. How Jaya and Vijay came to this material world is explained by Narada Muni as follows. Om Ajnanitimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumlitam Yenai Tasmai Shri Gurube Namah Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurduse Namah. Namo Brahmane Devaya Go Brahmahitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpadrubhyasya Kripa Sindhubhe Vacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Sometimes the devotees become very puffed up. The devotees in the making, they become very puffed up that I can speak very, very nicely. I can converse very nicely. I can make many devotees very nicely. It may be okay to say for some people, but for me, I'm the most fallen and I don't have any qualifications as such. But Srila Prabhupada's mercy and the Vaishnava's mercy is making me to sit on the Vyasasana, though I am not qualified. But Srila Prabhupada says, if you keep on chanting, if you keep on reciting, if you keep on hearing, one day you will be able to purify your existence and try to elevate the consciousness of the people who are completely grossly on the sense gratification situation to Krishna consciousness, because it is the transcendental touch which can transform all of us. The transcendental touch is that we are connected with the Guru Parampara system, and that makes us very distinct from the rest of the people. When you are hearing from Guru Parampara, the transcendental knowledge, it acts as a detergent on a dirty body, dirty senses, and it makes us to think about Krishna more and more. Because Krishna Rasayan, once tasted, can always make us more and more purer. And that's only possible in the bhakti. When you are rendering devotional service under the bona fide acharya, when you are, executing your devotional service, very nice. So in that adherence, in that, hearing process, you come to hear the nectarian Bhagavatam. And then slowly, you come on Sundays, you come on other days, and you will develop an interest in hearing the Bhagavatam. And when this interest, starts acting on your consciousness, then the Bhagavatam starts acting on you. And it starts acting on you, and you are becoming more and more purer every day. And this process, what Prabhupada is talking, is Nityam Bhagavata Sevaya. And when you are doing Nityam Bhagavata Sevaya, you may not know how it is acting upon your body, but it's acting upon you. And initial stage, you may have so much clinging to material activities, but in due course of time, you will see that the material activities and material interests will start receding, and you will be developing devotional service. Guru Mukha Padma Vakya Chitita Korina Akya. The moment you take a shelter of a guru, then automatically your heart says, Bas ho gaya. भौतिक संसार की बहुत कामनाओं को मैंने बहुत संतुष्ट करने की प्रयास में था,
मगर अब मुझे कृष्ण रसायन पीना है, कृष्ण रसायन पिलाया गया है, अब मुझे कृष्ण के काम में रत होना होगा। ये आप ही का नाम नहीं, ये आप ही को नहीं हो रहा है या हमको ही नहीं हो रहा है, ये अनादि आदिल काल से ये चलता आ रहा है। इसलिए सनातन धर्म इस तरीके से विस्तार हो रहा है कि कोई इसको कोई अंकुश नहीं लगा सकता। ये कायतव धर्म नहीं है कि अभी उठा और अभी खत्म हो गया। ये सनातन धर्म है और सनातनी लोग जो हैं सतत कीर्तन और नाम संकीर्तन और भागवत का अध्ययन करते हुए इस ध्वजा को सदैव फहराते रहते हैं। और आप सब से यही आशा है कि आप सनातन धर्म के ध्वजा को फहराते रहें, जहां पर भी रहें, सदैव अपने आप को ऐसे प्रसंगों में निबंधित करके अपने जीवन को प्यूरिफाई करें। भले ही हम में ये क्षमता नहीं होगी, मगर भागवत में है और भक्त भागवत में ऐसी क्षमता है कि वो आपके जीवन को पवित्र कर सकेगा। इसीलिए हम कई दिनों से ये प्रसंग सुन रहे हैं, बिकॉज आप कभी कभी हर दिन तो नहीं आते हैं, संडे संडे आते हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और मुझे भी ये 2-4 दिन के जो आप मिस कर देते हैं, फिर से बोलने का मेरा डिजीज हो चुका है कि मैं चाहता हूं कि आप भी इस क्रम में रहें जिस क्रम के अंतर्गत भागवतम चलता रहता है और उसको आप सुनने के लिए आतुर हो जाएं। और काश मैं इतना धनवान होता कि ये जो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग है उसमें सबको आपको उसमें डाल देता है, ताकि आप हर दिन सुबह मंगल आरती आते और गुरु पूजा में आते, क्लास में आते। तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो ठाकुर जी का किंकर भी नहीं बना हूं, मगर प्रार्थना करता हूं आप सभी इसमें रुचि पैदा करें। भले ही डिस्टेंस में हो, मत आने का प्रयास कीजिए। 7:15 बजे आइए दर्शनार्थी में, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब अटैचमेंट छोड़ दीजिए। 7:15 बजे यहां पर खड़ा रहिए, भगवान दर्शन दे रहे हैं, आप खड़ा रहिए किंकर बन के, हाथ जोड़ के। ऐसी प्रक्रिया आपको एक दिन उनका जरूर किंकर बना सकती। एटलीस्ट एक संडे के दिन तो बड़े उत्साह से तो आइए। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, हम बहुत दिनों से ये प्रसंग पढ़ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है ये प्रसंग सुन। बहुत से लोगों ने पहले भी मुक्ति प्राप्त कर ली क्योंकि उन्होंने सदैव कृष्ण के बारे में चिंतन किया और उन्होंने इस तरीके से अपनी अपवित्रताओं को पवित्र कर दिया, अपने आप को पवित्र कर दिया। कुछ लोगों के पास में काम वासनाएं होती हैं और वो कभी कभी भगवान के सुंदर संबंधों पर निबंधित हो जाते हैं। भले ही वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, फिर भी वो 10वें स्कंद को पढ़ना चाहते हैं जहां पर गोपियों का संबंध कृष्ण से। प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि सदैव भागवतम पढ़िए क्रम से, 10वें स्कंद में जाने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं जिनके पास में काम वासना हो या काम से मुक्त हो, जो कृष्ण प्रसंग सदैव सुनता है, एक ना एक दिन उसके जीवन में काम वासनाएं मुक्त हो जाती हैं। और ये सच है, इसमें आयोटा भी सच झूठ नहीं है। हम सभी बैठे हुए हैं, हम कहां से आए, फिल्म इंडस्ट्री से आए, वहां पर सब कुछ चलता है। क्या दारू भी चलता है, सुंदर स्त्रियां भी होती है, बहुत पैसा भी होता है, उसको आंखें छोड़ना बड़ा संभव है। मगर उस स्थिति में भी अगर आपको भक्तों का संग अच्छा लगा
चरणामृत पीना अच्छा लगा, दर्शन अच्छा लगा, कीर्तन में बैठना अच्छा लगा, वो स्थिति भी आपसे छूट जाएगी। और इसका साक्षात प्रमाण जो है आपके सामने बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ। ये कोई ऐसा उधर इधर ढूंढना नहीं है, ये आपके सामने। हाँ? 77-78 से भक्तों का संग चालू हो गया, तो आहिस्ता 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 ये सब छूट गया। और यही हालत आप सबका होने वाला है। आप मत सोचना कि आप बचोगे, आप सबका भी यही हाल होगा। सतर्क रहे, ये कृष्ण जितना जो लंपट है वो लपेटे में सबको लेता है, मगर जिसके पास ये श्रद्धा हो, सुनने की श्रद्धा हो, तो ये श्लोक में यही कहते हैं कि जितने भी कई लोग पहले आए उनको भगवान का आश्रय लेना पड़ा और उसको आश्रय मिल ही जाता। और जिसका मन सदैव कृष्ण में रहता है, जैसे कि कृष्ण डिमांड करते हैं भागवत गीता, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मगर जिसने भी ये किया, भले ही आर्टिफिशियली किया, थोड़ी देर के लिए किया, मगर उसका भी एंड रिजल्ट आध्यात्मिक जीवन होता है। तभी तो मैं कई बार बोलता हूं ये गोकुल बॉयज को, बस छोड़ दे, अभी यहां पर फुल टाइम ब्रह्मचारी बन जा। बहुत कीर्तन किया, लोगों को सुनाया भी, अब तो इधर आ जा फुल टाइम। तो यही द्वंद्व युद्ध में है ये सब लोग, एक ना एक दिन आएंगे जरूर, देख लेना आप, ये लोग आएंगे, मेरा ये आश्वासन है। नारद जी ये प्रसंग युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि गोपियों में कृष्ण को रिझाने के लिए काम वासनाएं थी, उन काम वासनाओं ने उनको सुप्रसिद्ध भक्त बनाया। कैन यू इमेजिन दिस? सुप्रसिद्ध भक्त बनाया, इतना भक्त बना दिया कि विदुर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे वृंदावन में एक थोड़ा सा लता पता बना दे ताकि ये भक्त मेरे ऊपर ट्रैम्पल करें और मैं आपका प्रिय बन जाऊं। मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है, वृंदावन में मुझे केवल लता पता बना दो ताकि ये ब्रजबालाएं मुझ पे पांव रख के मुझे एक न एक दिन भक्त बना सके। This is the potency of a pure devotee who can transform you. And a pure devotee who is hankering to become a devotee, he must take the shelter of a pure devotee so that they can go back home, back to God. That should be our always desire. As we have heard many times, Mahajanena Gata Supanta. We must follow the footsteps of the great Mahajans who have left behind the trails on which we can walk and go back home, back to Godhead. And the great Mahajan is Prabhupada. The great Mahajans are the Vartman Acharyas who are giving us access to Krishna. We have to focus in our devotional endeavors so that we can go back home, back to Godhead. Shishupal and other kings were envious. अगर कृष्ण के प्रति आपको ईर्ष्या भी है, इस ईर्ष्या को भी तुम एक दिन लांघोगे और कृष्ण के प्रिय बन सकते हो। ओके? यदु फैमिलीज ने कृष्ण के साथ फैमिली का संबंध किया, isn't it? वो भी मुक्त हो गए।
Then Pandavas were your great devotees. उनकी रक्षा कैसे भगवान ने किया? And हमने जो कुछ भी प्रयास किया कृष्ण को सेवा करने के लिए, इस पथ पे हम कृष्ण के प्रिय हो गए। कौन बोल रहे हैं? युधिष्ठिर बोल रहा है। तो इन केने प्रकार इन किसी भी तरीके से आप कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण की भक्ति करो, आप सदैव सेव्ड है। यू आर ऑलवेज सेव्ड। प्रभुपाद जी बता रहे 4-5 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, समीप्य एंड आस्ति। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। मगर जो वास्तविकता में शुद्ध भक्त है, वो इस सब की इच्छा नहीं करता रहता। वो केवल यही इच्छा करता है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। That's why this devotional service is very, very important, because this devotional service allows you to purify so instantly, because you are engaging your mind, your senses, your chintan, manan, everything in the service of Krishna. That is why it's very powerful. Prabhupada ji says in this purport, it is described here that the gopis, by their lusty desires, which were based upon their intense love for Krishna, became the most beloved devotees of Lord. Although the gopis at Vrindavan expressed their lusty desires in relationship with the paramour, they actually had no lusty desires. वास्तविकता में उनके पास काम वासना नहीं थी। वो दिख रहा था मगर काम वासना नहीं थी। वो भगवान के 100% शरणागत थे। They were married, they had children, they had everything, but they were completely sold out to Krishna for devotional service. So this is, then Prabhupada ji says, Kamsa was very much enemy of Krishna. So वो कंस भी क्या हमेशा सोचते रहते थे। किसके बारे में सोच रहे थे? कहीं आ तो नहीं गया। वो तब से ही, जब से पैदा भी नहीं हुए थे। ध्यान से सुनिए, जब से नारद जी ने बोल दिया कि देवकी के 8वां पुत्र तुम्हारे जीवन का कारण बन जाएगा, तब से ही वो चिंतन करने लगे। He had not appeared, he had not seen him, but he had heard word Krishna. Can you see how important it is? कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा। कृष्ण नाम में कितना आकर्षण है और कृष्ण नाम में कितनी शक्ति है कि कंस को भी आमादा कर दिया सदैव सतत सोचने के लिए। भले ही वो प्रतिकूल भावना से था, मेरे हत्या करने से, मगर भगवान ने सब माफ कर दिया भाई। This is Krishna. That's why many times we tell all the now Dikshit Bhaktas that while you are chanting the holy name of the Lord, chant attentively. Prabhupada ji, you will see many times in his lectures, sometimes somebody is sleeping or somebody is chanting and he is sleeping. So get up, chant very attentively. So this Krishna Rasayan has to be taken in a proper way and in a proper proportion and with proper attention. And when you take it proper proportion, proper attention, then you will see it will make a difference in your life. It could make a difference in the life of Kamsa. Why shouldn't it make a difference in your life when you are अनुकूल स्थिति में भगवान को भजने के आधार से हमारा जीवन शुद्धिकरण की ओर ही जाएगा। ओके, इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि और जो भक्त है
उनको भक्तों को संग मिलता है कृष्ण का. They are associating with in Vaikuntha. They are associating with with Krishna in Goloka Dham. That is the pure bhakti, you see. So, like Vrishnis and Yadus and father and mother of Krishna in Vrindavan all have familial relationship with Krishna. Okay? Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya, ये सभी संबंधों में किसी भी प्रकार में आप भजते हैं, भगवान आपको अपने करीब रखेंगे. Now the choice is yours. Then we come to know about somehow the other. नारद जी बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कृष्ण के को वेरी सीरियसली ले लीजिए. Somehow the other one must consider the form of Krishna very seriously. Then by one of the 5 different processes mentioned above, one can develop relationship with Krishna. किसी भी संबंध में अगर कृष्ण के साथ हैं तो बड़े सीरियसली संबंध रखें. So even like a Vena, if you are going against Krishna in a pratikul way, still you will get salvation. You see? That is Krishna consciousness. That is Krishna sambandha. Even if it is in a pratikula bhav, Krishna is going to give you. Like we have heard how Putana smeared the poison on the nipple of the breast, and Krishna gave status of mother. That's Krishna. So, Narad Muni continues and he says, O best of the Pandavas, your 2 cousins Shishupal and Dantavakra, the sons of your maternal aunt, were formerly associates of Lord Vishnu. But because they were cursed by Brahmanas, they fell down from Vaikuntha in this material world. ब्राह्मणों ने उनको कर्स किया. मगर यहां पर अभी जो श्लोक नंबर 35 है, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसमें, 34 में बता रहे हैं कि महाराजा युधिष्ठिर inquired what kind of a great curse could affect even liberated Vishnu bhaktas. अरे ये तो भगवान के भक्त थे, ये कैसा ऐसा शाप है जो उनको संसार में वापस पुनः ला दिया. And what sort of a person could curse even Lord's associate? वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो भगवान के संगियों को भी शाप देगा? For unflinching devotee of the Lord to fall down to this material world is impossible. कौन बता रहे हैं? नारद मुनि बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का कभी पतन नहीं होता है. शुद्ध भक्त जो है या स्वतः से आते हैं या कृष्ण उनको भेजते हैं. तो यहां पर बता रहे हैं क्योंकि शुद्ध भक्त कौन है? जन्म कर्म चमे दिव्यम, जिसने संपूर्ण रूप से भगवान के इन लीलाओं को समझा है, वो कभी इस धरती पे वापस नहीं आता है. एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना. भागवत गीता 4:9. कृष्णा इज कंसोलिडेटिंग हियर दैट वो कभी उसका पतन नहीं होता. One who knows the transcendental nature of my appearance, activities, does not upon leaving the body take this birth again in this material world, but attains my eternal abode. O Arjuna, Maharaj Yudhishthira therefore was surprised that a pure devotee could return to this place. But verse 35, what we heard, clearly clarifies this point that pure devotees come on this planet to fulfill the desire of the Lord. Now, what was the desire of the Lord? हमको जरा थोड़ा सा फाइटिंग करना है भाई. So I want to do some little fighting.
So he is not going to do little fighting with you and me. He knows that we are already busy in this material world fighting with our own positions. But he will like to have a better opponent for fighting. Okay? So he makes such arrangements where his lieutenants, great giant with the gatekeepers, who is on the gate? हमारे यहां पर गेट पे कौन है? We keep security, no? So gatekeepers are always usually muscle men. अच्छा strong है. Okay? तो भगवान को थोड़ा थोड़ा खुजली आया. हाँ? क्या करना है? मेरे को मल्लयुद्ध करना है. तो आप किसके साथ मल्लयुद्ध करेंगे? तो ठीक है, उन्होंने ऐसी लीला रची कि उनके जो दो गेटकीपर है जय विजय को भेज दिया. क्या बन के आ गए वो? कुंभकर्ण और रावण, शिशुपाल और दंतवक्र, एंड देन हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यप. तो उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया कि ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के रूप में आना पड़ा. अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च. So Lord takes also very happiness in coming in a different forms. You see, just try to understand. If you're playing a football, correct? I'm just giving an example. If a best Kushal football player is playing, so he is stealing the ball. But the opponent has to become much more greater to steal the ball from a best player. And they want to score the goals, isn't it? So these people came also very, very nicely as Hiranyaksh and Hiranyakashipu. So they started playing with the ball. What was the ball? Earth. And they stole this earth. And Krishna became more smarter. He said, you guys are really playing football with me. And that also not with the small football, but the whole Mother Earth. And they ran away with this. But Krishna being very, very clever, Krishnastu Bhagavan Swayam, Krishna being smarter than the rest, Krishna being the Supreme Personality of Godhead, as he completely says in the Bhagavatam, Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Anadi Ananta Rupam, Adyam Puranam Purusham Nava Yauvanam Cha. He's the youngest, he's the oldest. And we see Krishna is appearing as a boar incarnation. And he's lifting Mother Earth, the ball. देखिए ball कितनी छोटी है, Mother Earth. Huh? And he's stealing back, and he's bringing it back into the orbit, and he's stealing, and then he's killing him. So this is a drama, this is a transcendental drama between Krishna and his associates. Isn't it? And then we see wonderful Hiranyakashipu. Isn't it? He is terrorizing everybody. He is terrorizing not only with his caliber, try to understand this. He is doing austerity for 40,000 years. हिरण्याकशिपु ने कितने साल तपस्या किया? 40,000 साल, क्योंकि उस वक्त अवधि कितनी हुआ करती थी? 1,00,000. तो 40,000 तक उन्होंने तपस्या ही की. हम और आप उनके सामने क्या है? हमको 16 माला करने में बहुत तकलीफ होता है ना, है कि नहीं? सच बताओ. किसी को बोलो 16 माला करने के लिए, बोलता प्रभु जी 16 नहीं हो रहा है. सही ना, जैसे प्राण निकल गए उसके. 16 मतलब 1.5 घंटा, 16 मतलब 2 घंटा. भगवान के लिए 24 घंटे में से 2 घंटा नहीं दे सकता है ये.
सब कुछ खाएगा, सब कुछ पिएगा, मगर 2 घंटा काम नहीं करेगा तो कोई उसको नौकर रखेगा क्या? आपको कोई रख रहा है क्या कंपनी में? बताओ भाई, कंपनी में कितना घंटा सेवा करते हैं आप? 16 घंटा। आजकल को तो ऐसा रगड़ा पेटिस खिलाते हैं, क्या बताएं। हाँ? और जब हम बोलते हैं भगवत भक्ति में 2 घंटा दे दो तो प्राण निकल जाते हैं। करेक्ट? और यहां पर देखिए हम उसको बोलते हैं, अरे राक्षस, राक्षस। राक्षस ने देखो 40,000 वर्ष तक तपस्या किया, इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि उसके शरीर में से धुआं भी निकल गया। और ब्रह्मा भी डर गए कि अरे ये तो इतना तपस्या किया, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा उसके पास। Isn't it? मगर उस व्यक्ति को डिफीट करने के लिए भगवान को कैसा सुंदर रूप लेना पड़ा। अद्भुतम, अद्भुत, जो कभी किसी ने, देवता ने नहीं देखा, ना शिव जी ने देखा, ना ब्रह्मा जी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान का कभी नहीं देखा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद धाइने, हिरण्याकाशे पूर्वस्य श्रीलङ्कालकलाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। Prahlad Maharaj is surrendering to a wonderful form of Lord which has come in the form of a Narsingha, and he is offering his obeisances, he is doing, but one person is terrified. One person is terrified, that Hiranyakashipu is terrified. I had taken a boon from Brahmaji that I should not die, I should not this and that and everything, but Krishna knew how I have to kill this fellow. You become smart, I will become smartest. Okay? He did all that thing, isn't it? It's a fantastic drama, isn't it? This, the villain becomes more powerful and more powerful, and the hero becomes most powerful. That is Supreme Personality of Godhead. That is Krishna. Isn't it? So Krishna becomes more powerful and the most powerful. So he kills. And how he kills? Putting his devotee on the lap. मैं तुमको अच्छे तरीके से मारूंगा. हाँ? भगवान का मारना और प्रेम करना सब बराबर है. हाँ? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान एक अद्भुत स्वरूप के साथ आए अपने भक्तों को खेलने के लिए. Because these devotees wanted to give the best of the pleasure to the Supreme Lord.
When we can give pleasure to the Lord is only when we will execute our devotional service very, very nicely. Because somehow or the other we are not being put into a form of a Rakshasa. We have not been put in the form of an animal. We have not been put in the form of a dog or a hog or a camel or an ass. We have been put in the form of a human life, and human life also that Manush human life. And in this human life, if we execute devotional service very, very nicely, Krishna will be very pleased, and we can become associates of the Lord in his planet itself. We don't have to go. We don't have to become pratikul person of the Supreme Lord. We have to become anukul person. Anukul bhakti करते हुए हम नारद जैसे भगवान के संबंधी बन सकते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हमें हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे असुरी भावों को निकालना नहीं है, क्योंकि उसके लिए कृष्ण भगवान स्वयं आए. हमको थोड़े से प्रतिकूल भावनाएं अपने हृदय से निकालना है. काम, क्रोध, मद, लोभ, ये छोटा सा करना, निकालना. मगर प्रॉब्लम ये है कि यही हमसे निकल नहीं रहा. ये हमसे निकल नहीं रहा. इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आ गए हम पे कृपा करने के लिए. भाई कोई परवाह नहीं, तू क्या कर रहा है, चल तू भी, तुमको मैं ऐसा युक्ति देता हूं, तुमको ना राक्षस बनना पड़ेगा और ना मेरे को हिरण्याकक्ष बनना पड़ेगा. मैं चैतन्य बन के आऊंगा और तुम भक्त बन के रहो और ये नाम स्मरण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. दोनों स्थितियों में भगवान को बहुत कठिनाई करना पड़ा. मगर यहां पर जो 500 वर्ष पहले जी चैतन्य महाप्रभु आए, बड़ा सिंपल बोले, नाचो, गाओ और प्रसाद खाओ. मगर इसमें भी हमको नानी मर जाती है, isn't it? इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है. क्यों? 16 माला जप नहीं कर सकते, और जब तक 16 माला नहीं करोगे कनेक्शन जुड़ेगा नहीं. रिजेक्ट, यू कैन नॉट टेक दीक्षा, isn't it? देखो हमारा मन कैसे अटका हुआ है. लोगों का, संसारी व्यक्ति का कहां पर अटका हुआ है. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एनालाइज. चाय नहीं छोड़ सकता, मांसाहारी नहीं छोड़ सकता, मदिरा पान नहीं छोड़ सकता, खैनी नहीं छोड़ सकता. हा? ये इतने गंदे काम छोड़ नहीं सकता. भगवान बोलते हैं ये चारों गंदे कामों को छोड़ दे, तू मेरी शरणागत ले जा. मगर होता ही नहीं है, रास्कल का होता ही नहीं. फिर भक्तों को बहुत लतेड़ करते 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 बहुत से गुलाब जामुन खिलाना पड़ता है, बहुत सा प्रसाद खिलाना पड़ता है. तो एक दिन उसकी मति ठीक हो जाती है, बोलता ठीक है अभी आज चाय छोड़ देता हूं. और भक्त बेचारा खुश हो जाता, आज इसने कमिट किया चाय छोड़ देगा. वो खुश उतना नहीं होता, उसके प्राण खत्म हो जाते कि चाय छोड़ना पड़ेगा. भक्त बड़ा खुश हो जाता, आज उसने चाय छोड़ दिया, बिकॉज ये जहर पीना छोड़ दिया उसने. भक्त खुश हो जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं 50 साल पहले, 40 साल पहले मैं भी जहर पी रहा था, और अभी वो 40 साल से जहर पीना छोड़ दिया. इसलिए उसको मालूम कि बहुत अच्छा है चाहे जहर पीना छोड़. He rejoices when an aspiring devotee commits himself to be the follower of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he is chanting the holy name of the Lord. He is giving up all these petty interests in his life, and he is ready to take the shelter of the holy name of the Lord. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama. The process of purity starts. The process of purity starts, and we emerge better devotees on the path of devotional service. In the purport, it is said that this significant question cannot be answered by an unwanted person. This significant question can be answered by only
devotee. That's why Yudhishthira Maharaj is putting this question in front of whom? Naradji. Because Naradji is one of the finest devotees of the Supreme Personality of Godhead. And likewise, if you want to become a better devotee in your life, you have to give up your petty interest, you have to give up your material allurements, you have to give up your material attachments, then only you will be able to become a devotee in your life. And once you become a devotee, once you execute devotional service, Teisham satata yuktanam bhajatam priti purukam dadami buddhi yogam tam yena mam upyantate. That the Lord will bestow you with the intelligence, and with that intelligence, you will be able to understand these higher pastimes of Krishna and Krishna Sambandhi devotees. And that's how, when you will understand the Srimad Bhagavatam in your life, then you will have no affinity to the material world, you will have no affinity to your sense gratification, you will emerge a better devotee in your life, and that is the perfection of human life. And while we are reading these anecdotes and we are reading these wonderful pastimes of Krishna, you will feel very joyful, because your hero, your Krishna, is bashing the enemies, and you are feeling very, very happy about it, that my Krishna, my hero of my life, is none other than Krishna, my life's hero. When Krishna becomes the hero of your life, then you don't have to worry about any damn thing in the material world. It depends upon you how much unflinching faith you have in Krishna's lotus feet, and then he will give you and reward you everything what you want. At the time, you will not aspire any petty things in your life. You will aspire only devotional service. And in this age of Kali Yuga, devotional service can crop up within your heart by the moment you chant the holy name of the Lord. If you adhere to the instructions of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Harinama, Harinama, Harinameva Kevalam, Kevalam, then these wonderful episodes of the Bhagavatam can be understood. We can understand the higher intricacies of the spiritual life. We will chant the holy name of the Lord, and we will go back home, back to God. That ashvasan Krishna is giving, and that ashvasan even the pure devotee can give you, that if you execute your devotional service very, very nicely, otherwise you keep on loitering in this material world. You keep on taking the shelter of the impersonalists. Prabhupada is saying that the impersonalist falls down, but the devotee never falls down. मायावादी का पतन हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं भगवान के एफिलिजेंस में मिल जाऊंगा, मगर उस what is that mukti called? सायुज मुक्ति से भी नीचे गिर जाओगे, मगर भक्ति के पथ में सदैव आप विजयी बन जाओ. इसीलिए इम्पर्सनलिस्ट लोग फिर इस संसार में आ जाते हैं, मगर भक्त जो है सदैव भगवत धाम जाते हैं. वो यहां पर भी सेवा की कामना करते हैं और उधर भी सेवा की कामना करते हैं. इसीलिए हर प्रतिदिन हम तुलसी महारानी से यही याचना करते हैं, एक तो सेवा दो मुझे, और नित्य धाम में सेवा दो. और क्या चाहिए आपको? और वो भी किसको कर रहे हैं? सेक्रेटरी को, है कि नहीं? सेक्रेटरी को इल्तिजा कर रहे को हमको जरा छोड़ दो, अंदर अंदर छोड़ दो. तो पहले सेक्रेटरी को करना पड़ेगा ना. वृंदा देवी क्या सुबह तुलसी महारानी को क्या याचना करते हैं? सेवा अधिकार दियो, करो निज दास. Isn't it? समझ आया? मतलब समझ आ रहा है क्या? हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की सेक्रेटरी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सेवा का अधिकार दो. इसलिए प्रभुपाद जी ने तुलसी आरती सुबह रखा, ताकि आप ये मत समझो कि ये सेवा ऑर्डिनरी है. सेवा is a process by which you will become purified. सेवा एक संबंध है, वो आपके
तन मन धन को पवित्र कर देता है और आपको काबिल बना देता है भगवान की सेवा करने के लिए। यहां पर प्रैक्टिस करोगे वहां पर परफेक्शन आएगा, यहां पर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो परफेक्शन कहां से आएगा। अगर यहां पर सिर्फ प्रसादी भक्त बन जाओगे, हाँ, सेवा नहीं करोगे, तो हो सकता है भगवान आपको वहां पर किसी जगह कोई लीला में भीम वीम बना देगा आपको, और क्या है। अगर अगर आप रियल सेवा करना चाहते, परफेक्शन इन द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड, यू हैव टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस फ्रॉम हियर। You have to do it. You should always aspire to do more and more seva. As long as you have a body, you execute devotional service. As long as you have, inclination, you can execute devotional service. And this devotional service is going to purify you, and that's what we have to. So we are not looking for Sayuja Mukti, correct? We are looking for devotional service. That's what is required. O Lord, the intelligence of those who think themselves liberated but who have no devotion impure, even though they rise to the highest point of liberation, they come down. Okay? And they are sure to fall again into the material existence, for they do not take shelter at your lotus feet. The impersonalists cannot reach the Vaikuntha planet to become associate of the Lord. मायावादी जितने भी हैं ऐसा वाले, वो कभी भगवत धाम नहीं पहुंचते, प्रभुपाद जी शुद्ध बताते। So we should always aspire to be wonderful devotees. It is said, those who are always indulging into these wonderful activities, Sranavanad Darshanad Vapi Mahapatakino Apiva Suddheran Ante Jaschapi Kim Yo Sambhasanadvi. This devotional service is so purifying, my dear brothers and sisters, that even this sinful person is executing devotional service, and even the social outcasts, अगर शूद्र भी, कभी कभी भारतवर्ष में शूद्र को सोचते हैं कि वो कभी भक्त नहीं बन सकता, उसको दूर रहना चाहिए, और अभी भी हमारे कुछ इलाकों में भारतवर्ष में ब्राह्मण लोग और क्षत्रिय लोग शूद्रों को तिरस्कार करते हैं, ऐसे मूर्खों को लताड़ देना चाहिए। यहां पर श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं 12वें स्कंद में 10वें चैप्टर में 25वें श्लोक में कि निम्न से निम्न जाति वाला भी अगर भगवत भक्ति करता है तो ही गेट्स प्यूरिफाइड, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, एंड ही कैन सी, वो भगवान को आंख से आंख देख सकता है, आंख में आंख डाल के देख सकता है। इतना भगवत भक्ति में शुद्धिकरण का शक्ति है। Imagine then how purified they become by directly speaking with you. जो साक्षात भगवान के साथ वार्ता करता है, ये लॉर्ड शिव जी बता रहे हैं मार्कंडेय ऋषि से। ये भक्ति का इतना प्रताप है। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देवमायं सित्री शूद्र हुना सबरी अपि पाप जीवा यदि अद्भुता कर्म प्रयाण शील शिक्षा त्रयाग जन अपि किम यो श्रुता धारणये। जो समर्पित आत्माएं होती हैं वो भले ही अगर even from groups leading the sinful life, अगर वो सबर फैमिली से हो, जो सुअरों को पालते हैं,
मांसाहारी भी क्यों ना हो, सच एज अगर क्षत्रिय है, लेबरर है, किसी प्रकार का व्यक्ति है, हाँ, अगर पक्षी भी है, they can be purified by the science of bhakti. You see? And become liberated from the clutches of the illusory energy by surrendering unto the pure devotee of the Lord. एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में जाने से ये सभी का उद्धार हो सकता है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो कीट है, कोई भी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है चैतन्य लीला में, शिवानंद, what is his name? That rishi, he used to have a dog, Shivanand Sen. So the dog also went. And it's practical. We have seen it. We have seen in Brajmandal Parikrama. अरे आप बिलीव नहीं करोगे, एक दफा मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में जा रहा था, एक कुत्ता चाल स्टार्ट हो गया वृंदावन से। ध्यान से सुनो आप, वो हमारे साथ चलता गया और उसने पूरा ब्रजमंडल कर लिया भाई। और ध्यान से सुनो, फिर विश्राम घाट से हम लोग बसें पकड़ के वापस मथुरा जाते हैं, वापस वृंदावन जाते हैं, तो ये कुत्ता भी बस में चढ़ गया। ये सब पूरा ब्रजमंडल किया उसने, 1 महीना वो ब्रजमंडल में था, और वो बस के साथ। फिर सब लोगों ने बोला अरे ये तो पीछे पीछे ही आ रहा है यार। बोला नहीं नहीं, ये हमारे साथ ब्रजमंडल में था, इसको बस में आने दो। तो जब हम वृंदावन के ये वो जो फाटक के पास में पहुंचे, वहां पर एक चुंगी है परिक्रमा मार्ग के ऊपर, तो जहां पर वो फाटक पे आ गया तो गाड़ी थोड़ा रुका, तो ये कुत्ता ऑटोमेटिकली नीचे उतर के वृंदावन में चला गया। 30 दिन का संग, 30 दिन का प्रसाद, 30 दिन का प्रसंग कुत्ते ने भी सुना भाई। और वो ऑर्डिनरी कुत्ता नहीं है, वृंदावन का कुत्ता है। भक्तों का संग किया, भक्तों का प्रसाद लिया, वो हमेशा पत्ता चाटता था। उसका गति नहीं होगा तो क्या होगा? भक्त पत्थर छोड़ते थे ना, तो वो पत्तलों को चाटता था। This was the beauty. I have seen Pratyaksh myself, I am telling you. And he got up at the chungi, थोड़ा सेकंड के लिए चुपचाप करके निकल गया बस। So this is what Prabhupada ji talking about here. Surrendered souls, even from the groups leading sinful lives, such as women, labor class, mountaineers and sabras, or even the birds and the beasts, can also know about the science of Godhead and become liberated from the clutches of the illusory energy by surrendering to a pure devotee. भक्तों का संग देखा उन्होंने, 2000-3000 भक्त जा रहे हैं, कुत्ता भी चला गया उनके साथ में, 1 महीना परिक्रमा किया और वो भी भक्त ही बन गया। So this is the potency of devotional service, my dear friends. Sakranmana Krishna padar vindayo निवेशितम तद्गुण रागिये रिहा नते यमं पासभृतश्च तद्भृतान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चिरणनशेषदा. Although not having fully realized Krishna, this is like me, okay? Not like you, you are so elevated souls. Although not having fully realized Krishna, persons who have even once surrendered completely unto his lotus feet and who have become attracted to his name, form, qualities, pastimes, are completely freed of all the sinful activities. And they have thus accepted the true method of atonement. Even in dreams, such surrendered souls do not see Yamaraj or his ordered carriers who are equipped with ropes to bind the sinful.
अनायास से भी आप लोगों ने ये भक्ति में प्रवेश किया है तो यमराज का पाश आपको बांध नहीं सकता, इतने भाग्यवान हैं आप। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बता रहे, श्रीमद् भागवतम बता रहा। हाँ, it is saying, devotees never see Yamaduta. This is Sukdev Goswami Maharaj to Parikshit Maharaj. भागवत की महिमा और भागवत प्रसंगों की महिमा। ये लाभ है इन प्रसंगों को सुनने से, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से भक्त बने और एक दूसरे का सहायता करते हुए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए भगवत धाम जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Any questions or any comments? You are most welcome to comment or speak anything or any questions. Yes, Mataji. Obviously, we have to understand the difference between Jai Vijay and ourselves. If we think that we are also Jai Vijay, I think we are mistaken identity. We must understand that we are but the jiva, we have fallen in this material world, and we have to climb the ladder of pure bhakti so that we can go back home, back to God. They are all wonderful devotees. They are associates of the Lord. They are the darbans of the Lord. We are not even darbans of our senses. Our senses slip out. Isn't it? We are not even the custodians of our senses. We have no control on our senses. Under this situation, how can we compare ourselves with Jai Vijay? That is why precautionary note for a devotee, aspiring devotee, is that he doesn't commit mistakes. He doesn't make any offenses. That the great Acharya says that while you are chanting the holy name of the Lord, don't blaspheme the devotees who are dedicated their life. Don't consider the demigods equal to Krishna. Don't, disobey the instructions of the spiritual master. If you are doing all these things in your life, one day you will become a better devotee. And we have seen in our lives those who have been aspiring for devotional service very nicely, very meticulously, they have left the body in Vrindavan thinking about Krishna all the time. And those who think about Krishna at the time of the death, it is sure that they will go back home, back to Godhead, 100%. So, we should be very precautionate. We have to take precautions while executing devotional service, that we don't offend anybody, we don't become sense gratifiers again, we don't become, victims of our senses again. And if we try to avoid victimization of our senses, then our soul will emerge victorious on the path of devotional service. I hope it answers your question. You don't worry about where were you. You worry about now, where are you? Okay? You worry about now. If you are eternally resident of that, you will go back to. So why you are still problems? Yes, Prabhu. They're all associates of the Lord. The relationship is there, no?
They are associates of the Lord. हाँ जी. Yeah, because this is their third birth, no? Kamsa and Shishupal and Dantavakra. So Kansa is also playing a part in his life. Kalanemi, yes, yes. Yeah, that's correct. What else? Anybody has got any question? Sir, you have any question? Anybody? देखिए, एक चीज याद रखिए, किसी स्थान में भी जाएं आप, कुछ लोग गेटकीपर के दोस्त होते हैं, कुछ स्टोनों के दोस्त होते हैं, कुछ क्लर्क के दोस्त होते हैं, कुछ मैनेजर के दोस्त होते हैं और कुछ प्रोप्राइटर के दोस्त होते हैं. अब किसी ने गेटकीपर को दोस्त समझ के बैठा हुआ है कि वो प्रोप्राइटर है, तो हम क्या करें उसमें? अब उसको जीने का तो हक है कि नहीं? और आप अच्छे भाग्यवान हैं कि आपको प्रोप्राइटर के साथ संबंध है, तो इसमें खुश रहिए. क्योंकि क्या है, तुंडम तुंडम मतिर भिन्ने. जो गेटकीपर है उसका भी अपना एक सर्कल है. वो हमेशा सोचता होगा कि मैं कब प्रोप्राइटर बन जाऊं, मगर प्रोप्राइटर बन नहीं सकता ना. तो ऐसी स्थिति पे हमें केवल दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. ऐसे लोगों पर दया करें और ऐसे लोगों को प्रसाद खिलाते रहिए. उनकी मति सुधर सकती है. और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, मांसाहार मदिरा पीना जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता. प्रभुपाद जी ने अथक प्रयास करके अमेरिका गए, सबसे बद से बद जीवों को उन्होंने वैष्णव बना दिया. क्योंकि शास्त्र यही कहता है, ये वैष्णव की कृपा से ही ऐसे व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है. जैसे कि शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है, उनके साथ क्यों चलते? हजारों लाखों करोड़ों भूत उनके पीछे चल देते, क्योंकि हिज भूतनाथ. बोलते हैं कि उनकी सेवा करते 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 वैष्णव की कृपा होके उनको भूत योनि से मुक्त किया जाता. अब समझे कि नहीं? तो उनका भी मुक्ति हो जाता कई जन्मों के बाद. तो ये लोग जो अपराधी लोग हैं, किसी दिन प्रसाद मिलेगा प्रभुपाद जैसे संत से या हरे कृष्ण भक्त से, तो उनका मुक्ति हो सकता है. मगर जो अपने ही कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, उसको मुक्त भी किया जा सकता अगर वो संग करेगा. अमेरिका, रशियन, यूरोपियन डिवोटीज ने संतों का एसोसिएशन किया और उस बद स्थिति से ऊपर उठ गए. यहां तक कि यवन आदमी प्रभुपाद जी के सानिध्य में चला गया, उनका नाम ही था यावन हरिदास, अरब का था डिवोटी. वो प्रभुपाद जी के सानिध्य में गया, मांसाहारी छोटे मुसलमान था. चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का अवतार मुसलमान में था,
उसको उद्धार कर दिया हरि नाम सब करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हर समय पे ऐसा हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने ये कलयुग में दिखा दिया है कि हरि नाम में कितनी शक्ति है, isn't it? तो हमको भी उनके पदचिन्हों पे चलते चलते जो भी हमारे पास आए, निम्न से निम्न व्यक्ति भी आए, उनको प्रसाद खिलाइए। जहां जोर नहीं चलता उनको प्रसाद खिलाइए, जहां प्रेम चलता है वहां पर भागवत गीता दे दीजिए, जहां वो सुनता ही नहीं है तो उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, isn't it? क्योंकि आजकल घरों में भी बेटा बोलता है मैं मैकडोनल्ड जाऊंगा, माँ बोलती है मैं पाव भाजी खाऊंगी, और बेटी बोलती है नहीं मेरे को तो आज पिज्जा हट में जाना है। तो एक ही घर में तीन विचार, वो टेबल डिवाइड हो चुका है। एक टेबल, डिनर टेबल, लंच टेबल डिवाइड हो चुका। एक बोलता है पाव भाजी, एक बोलता है पिज्जा, एक बोलता है मैकडोनल्ड्स। क्या करेंगे आप? उनको केंद्र बिंदु करना है केवल यही कृष्ण नाम से, उनको कृष्ण प्रसाद खिला के सबको सपाट करना है। और इसमें हमें इंटरेस्ट लेना होगा, क्योंकि ये वर्तमान की विकृत स्थितियां जो सोसाइटी में पैदा हुई हैं, उसको ठीक करने के लिए कृष्ण भक्तों को सामने आना पड़ेगा, हिंदू जाति को जागृत होना पड़ेगा। कब तक सोए रहोगे इस माया के आघोष में? अब उठ, जागृत अवस्था में अपने धर्म के साथ प्रेम कर ले और माया के साथ मत प्रेम कर ले। हाँ? इसलिए हमको ये जागना पड़ेगा, सबको प्रचार करना पड़ेगा। मुसलमान एक छोटा सा टोपी लगाएगा, मैं आपको बोलूंगा भाई आपका कंठी माला किधर है, आपका तिलक किधर है, तो हिंदू को क्या प्रॉब्लम है? उसको तिलक लगाने में प्रॉब्लम है, उसको शर्म आती है। तो बहुत से प्रॉब्लम हैं सोसाइटी में। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि इस जीवन में आपने आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है, इंटरेस्ट जागना है, शास्त्र पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए, भक्तों का संग रखिए, वही असली संपत्ति है। जिस संपत्ति के पीछे हम सुबह से शाम तक भाग रहे हैं वो तो इधर ही रहने वाली है, उसके ऊपर नष्ट मत कीजिए समय। इसलिए 24 घंटे में से एटलीस्ट 2 घंटा दे दीजिए ताकि वो 24 घंटा का सदुपयोग हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। जय हरि बोल। बोलो श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, निताई गौर सुंदर भगवान की, गौर प्रेमानंदे। Always I will prefer mridanga than that one, what Haridas Prabhu was playing. So always 2 mridangas will be very nice, because this mridanga is mridanga and that is not mridanga. That's not good, that's not really setting the tune of sort of kirtan. Gaurang Mahaprabhu used to always play khol, and that is what